अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री का पेपर कुछ दिनों से पेंडिंग में चल रहा है। तो अब इंशाल्लाह अज़्ज़ आप लोगों की बाकायदा डेट शीट आ चुकी है, जो कि 17 को आपका तर्जुमातुल कुरान का पेपर, 18 को केमिस्ट्री और 19 को आपका इस्लामिक का पेपर इंशाल्लाह अज़्ज़ होगा। तो अभी केमिस्ट्री चूँकि थोड़ा खुश्क सब्जेक्ट है और बच्चों को बहुत मुश्किल भी लगता है, इसको तैयार करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है रादर दैन आप फिज़िक्स बायो करते हैं, तो उसके हवाले से थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। तो उसके लिए आप लोगों की फैसिलिटी के लिए मैंने जो है वो कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे, जो कि इंशाल्लाह केमिस्ट्री के पेपर में ज़रूर आएंगे। इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में ना आ सकता हो, कोई इरेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। तमाम क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों ने उनको मस्ट प्रिपेयर करना है। इफ़ यू वांट टू गेट 60 और 60 मार्क्स देन यू शुड प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस ब्रिलियंटली। तो शॉर्ट क्वेश्चंस का गैस है, इंशाल्लाह आपको लॉन्ग क्वेश्चन का गैस भी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और एमसीक्यूज के बारे में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 नेम्ड एज फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, व्हाई इज इट नीडेड। तो इतना तो बच्चों ने याद किया होता है, लेकिन जो व्हाई इज इट नीडेड है, इसके हवाले से बच्चे इसको प्रिपेयर नहीं करते। तो दोनों में ये शॉर्ट क्वेश्चन इकट्ठा आता है, तो एक एक नंबर का होता है, तो आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज meant by atomic mass, and next question है जी, differentiate between homoatomic and heteroatomic molecules with example, difference between cation and anion, and similarly define free radical and give an example. Write down the difference between molecules and molecular ion. What is meant by triatomic and polyatomic molecules. Similarly आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे how does homogeneous mixture differ from heterogeneous mixture? What is the relative atomic mass and how it is related to gram? And next question आपके पास है जी, define empirical formula with an example, state the three reasons why it is a mixture and water is a compound। आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। एंड सिमिलरली इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, define atomic mass unit AMU, define empirical formula and molecular formula। and next question जी, write down the difference between mixture, compound and mixture। and similarly आपके पास है जी, define valency and write an example। तो केमिस्ट्री में एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप अगर एग्जांपल के बगैर क्वेश्चन कर आएंगे तो आपको 50% मार्क्स मिल जाएंगे। कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसमें से 1 नंबर मिलेगा। Write empirical formula of benzene and hydrogen peroxide, write the empirical formula of glucose and benzene, define gram and gram molecule। ग्राम एटम है और ग्राम मॉलिक्यूल है, ये एटम हिस्सा है इसमें से। राइट डाउन एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है आपने, उसकी डेफिनेशन करनी है और एग्जांपल्स देनी है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 में से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, an element has an atomic number 17, how many electrons, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं कि एलिमेंट शेल के अंदर। एंड वाई इज द कैल्शियम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कैल्शियम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है मैग्नीशियम से। गिव 5 characteristics of cathode rays, right? What are the defects of Rutherford atomic model? What is plum pudding theory and who presented it? And write down 2 characteristics of Canard rays and why positive rays are also called Canard rays. Write down the 3 characteristics of neutron particles। Similarly question आपके पास, write down the
Observation of Rutherford experiments. Write down the two postulates of Bohr atomic model. Write down the difference between Rutherford and Bohr atomic theory. And what is meant by quantum? And differentiate between the shell and subshell with example of each. And write the electronic configuration of Al positive 3 and how many electrons can valence shell accommodate. And write the difference between शेल एंड सब शेल डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जो आपको 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी हुई है उनको भी आपने वेल प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि उसमें से एक या दो एलिमेंट जरूर पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 में से पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में से आपके पास क्वेश्चन सबसे पहले ग्रुप एंड पीरियड की डेफिनेशन पूछी गई है। साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलर इन अ पीरियड। व्हाट इज एटॉमिक मेंट बाय एटॉमिक रेडियस। What is the difference between Mendeleev and periodic law and modern periodic law? Mendeleev periodic law के अलग से भी क्वेश्चन आया हुआ है। periodic function क्या होता है? Newland's law of octaves and what is meant by transition element and why are the element of group 13 to 18 called the p block element? Define modern periodic law। and similarly आपके पास questions हैं जी। What do you know about the Wiener's triads and write down the two characteristics of long form of periodic table. Why do element called S and P block element give the trend of ionization energy in a period? What is shielding effect? What is the difference between what is the trend of shielding effect in a period? Define ionization energy. These are the most important questions from chapter 3. And what is the trend of atomic size and atomic radius in periods and groups? Describe the trend of ionization energy in groups. What is meant by first ionization energy? What is meant by second ionization energy? Why the second ionization energy is higher than the first ionization energy? What is meant by electron affinity? And what is the trend of electron affinity in a period? What is meant by electron negativity? What is electronegativity? Write the electronegativity of chlorine and the write down the trend of electronegativity in a group। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन करनी है, एग्जांपल तैयार करनी है, साथ में उनके ट्रेंड्स तैयार करने हैं। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन है जी एटॉमिक size increase from top to bottom in a group Y and the ionization energy of sodium is less than magnesium Y. What's meant by effective nuclear charge? What is the trend of electronegativity in a period and why the second ionization energy of magnesium is higher than the first ionization energy? And why the same here P2Y question, why the ionization energy of sodium less than magnesium? Chapter number 4 structure of molecule। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले आपके पास डिस्क्राइब एटलीस्ट टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो दो नेसेसरी कंडीशंस क्या होने चाहिए जिससे हम कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट bonds? And similarly आपके पास क्वेश्चन है जी explain with example what is the relationship between the electronegativity and polarity, what is the ionic bond and how it is formed. Describe polar covalent bond with an example. Describe non-polar covalent bond with an example. What is meant by coordinate covalent bond? Give example. What is meant by metallic bond? How it is formed. Next question आपके पास है जी what is the difference between donor and acceptor? Write down the relationship between electronegative and electronegativity and similarly polarity in covalent bond. And why polar covalent bond exists in water. Define bonding electron. Why does ice floats on water? This is most important question. And define hydrogen bonding. Why the boiling point of water is greater than alcohol. Explain the formation of coordinate covalent bond in BF3 and NH3. Ionic bond are solids. Justify matters are good conductor of electricity. Why? Give the characteristics properties of ionic bond compounds and write down the two characteristics of covalent compounds. Write down the characteristics of matters. Write down the characteristics of non-polar compound. Write down the characteristics of coordinate covalent bond and define ionic and covalent bond. These are the most important questions of chapter 4. Now we discuss about chapter 5 physical state of matter। चैप्टर का नेम शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन
डिफ्यूजन की डेफिनेशन करनी है और आपने एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू Pascal. Define diffusion. Give one example. Define pressure and what its units, and why does diffusion take place more rapidly in gases than liquids, and what is the difference between diffusion and fusion? What is the pressure? What are its units? State Boyle's law and write its mathematical equation. And similarly आपके पास है जी what is difference between systolic and asystolic pressure state Charles law को आपने explain करना है। what is absolute zero and write its units। what is the effect of surface area and evaporation on evaporation पर surface area पर evaporation का क्या असर होता है। and rain drops fall down explain the reason। kerosene first over the water while the honey settle down on water give reason। most important question tricky है थोड़ा सा जो है वो आपके पास conceptual है जरूर पूछा जाएगा। what is the difference between evaporation boiling point why liquids are mobile। ये मोबाइल जो हम यूज करते हैं मोबाइल नहीं है, मोबाइल का मतलब आज़ाद होता है। तो write down two characteristics of solid and differentiate between amorphous and crystalline solid and write down the use of salt to preserve metals। हमने मीट को जो है प्रिजर्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाट इज द रीजन फॉर द difference between solution, colloids and suspension। what is meant by colloids? Give example। what is standard effect? on what factor it depends? what is the difference between solution and colloids? write the difference between suspension and colloids। write down the two characteristics of colloids। what is meant by solute? give two example। write differentiate between solution and aqueous solution। what is the difference between the solute and solvent? what is the difference between dilute and concentrated solution? what is the difference between the saturated and unsaturated solution? what type of solutions are frog and brass। ये frog नहीं है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, fog आना था FOG। उसके बाद water alloy give example। what do we mean by volume by volume percentage? what is meant by percentage? volume by mass? what is meant by percentage? mass by volume? define molarity। what do you know about like dissolve like rule? example से justify करना है आपने। justify with an example that solubility of salt increase with increase in temperature। why do we sit stir paints thoroughly before using? इसका मतलब ये है कि हम पेंट्स को यूज़ करने से पहले अच्छी तरह हिलाते क्यों हैं। जिस तरह से हम जो है वो कभी सिरप इनटेक कर रहे हो तो उसको उससे पहले हिलाया जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि वो सस्पेंशन होते हैं और सस्पेंशन के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं और जो है वो उसको हिलाने का मकसद ताकि वो अच्छी तरह से हल हो सकें। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। व्हाट सोल्यूशन इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन नेल्सन सेल। electroplating on steel carried out। write down two chemical properties of halogen and define oxidation in terms of electrons। give an example। what is the difference between between valence and oxidation state? write down the difference between spontaneous and non-spontaneous reaction। define oxidation and reduction। define reduction according to electron। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास राइट डाउन द टू रूल्स ऑफ रासायनिक ऑक्सीडेशन। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 and difference between the strong and weak electrolyte। difference between the oxidizing and reducing agent। name byproduct production। Nelson says write down what are strong electrolyte, give example। what are weak electrolyte, give example। and similarly आपके पास next questions हैं what is anode
What is the difference between the anode and cathode, and what is galvanic cell? Give example. What is star bridge? Why is it basic? What is its basic role? तो उसका बेसिक रोल क्या है साल्ट ब्रिज का? इट्स मीन साल्ट ब्रिज का फंक्शन आपने बताना है.